This is Mrs. Kundra for IELTS Without Effort, an ex-IELTS examiner. And this is the cue card coming to you from an ex-IELTS examiner. See, this is the cue card that will be appearing from those who are doing the speaking from Jan to April. And it is a very technical kind of a cue card where it becomes difficult to make a story. So I thought that I will be doing this. So I'll be doing it in Hindi also. हिंदी में भी मैं करूँगी क्योंकि I have most of the students also from India, though of course from the world all over. So, excuse me. So, describe a person who works on space, space exploration. जो ये खोज करते हैं हम किसकी? स्पेस की, right? Then who the person is, देखिए this is very technical, you should know who the person is. एक person को आपको choose करना पड़ेगा and you have to describe that person, right? How you know about him, आप कैसे जानते हैं? How you know, आप कैसे जानते हैं उसके बारे में? कहाँ पे पढ़ा, कहाँ पे आपने देखा उसके बारे में? What exactly he does, वो क्या करता है या करती है, right? And how you feel about it, means आप क्या सोचते हैं, whether he is contributing it constructively to the world or you think whatever work he is doing is destructive, ना? आप ये भी सोच सकते हैं वो destructive है. See, in the speaking exam ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप अच्छा बोलें उसके बारे में या you don't like that person, it is okay. The only thing is the language. और ये यहाँ पे बड़ी technical language है. The language is very technical. You will not know about that person. आपको उस person के बारे में मालूम नहीं होगा. इसलिए this is a very important cue card. आप please बने रहें towards the end because मैं खाली speaking module की नहीं देती हूँ आपको vocab. मैं आपको राइटिंग की भी देती हूँ कि इसके साथ बेटा आप राइटिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी मीनिंग सब आपको मिलता है बेटा. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग. आई नो आपको लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं है, पर बिलीव मी जो लॉन्ग वीडियो होगा वो इसलिए होता है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए. आई वॉश नहीं होएगा कि चलो बस पढ़ा और बच्चे को समझ आया नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होएगा. आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा. ओके, सो एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये जो लैंग्वेज है ये आप राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं. इसलिए यू शुड बी टू द लास्ट फॉर योर बेनिफिट. ऑफ कोर्स इट विल बेनिफिट यू एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एन ex-IELTS एग्जामिनर. नाउ लेट्स सी. अब आप बताएंगे दैट स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अ हाईली टेक्निकल फील्ड, है ना, बड़ा टेक्निकल है. इट इज़ नॉट हर एक कोई नहीं करता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है. एंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. ओ मैम मैंने तो ये बोल दिया कि आइडिया नहीं होता है. इट इज़ ओके. majority of the people you can say, and a large proportion of people or populace does not have an idea about it. You can say, कह सकते हैं आप. As I have an immense interest, immense means great, बहुत ज़्यादा interest, ना, रुचि होना. What I feel is in Hindi it is रुचि in it, due to that, because of that, due to that, आप कुछ भी लगा सकते हैं. This is a linking word और ये complex sentence बन जाता है. I regularly, अब ये वाला जो है due to that, you can also use it in your राइटिंग. देखिए राइटिंग और स्पीकिंग इकट्ठी हो रही है और आपको टुवर्ड्स द एंड रहना है ताकि आपको सारी लैंग्वेज समझ में आए. एंड सारी जो यहाँ पे लैंग्वेज है वो 7+ है. आई रेगुलरली फॉलो अ पर्सन हु रेगुलरली फॉलो, ओके, और आई फॉलो ऑन रेगुलर बेसिस. रेगुलर बेसिस भी हो सकता है. अ पर्सन हु इज वर्किंग टायरलेसली, बिना थके, टायरलेसली, बिना थके, कंसिस्टेंटली और ambitiously on exploring
space, ना. अंतरिक्ष, I think it's called, exploring space is अंतरिक्ष, ना. उसके बारे में जानकारी करना, लेना, exploring, okay. So आपका बहुत इंटरेस्ट है, इमेंस इंटरेस्ट है आपका, राइट. एंड आप इसके कारण आप यू गो टू द इंटरनेट, है ना. आप इसके बारे में एक्सप्लोर करते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, ओके. सो नाउ हु द पर्सन इज, राइट. द सेकेंड वन वॉज who the person is and how you know and what he does and how you feel. इन सबको हम एड्रेस करेंगे वन बाय वन. नो हम पर्सन बताएंगे. द नेम ऑफ द पर्सन इज एलन मस्क. ही इज क्वाइट फेमस, बहुत फेमस है. ही ओन स्पेस एक्स, एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन स्पेस रिसर्च. वो ओन करता है, यानी कि ही इज द ओनर, ही इज द ओनर एक कंपनी जिसका नाम क्या है, स्पेस एक्स. और वो क्या करती है, इन अंतरिक्ष की खोज करती है, खोज, रिसर्च. एंड हाउ डू यू नो इट? नाउ एलन मस्क डील्स इन, rather you can also say he has interests in multiple businesses, even that you can say. He is quite active on the social media platform Twitter. So actually he is the owner of that platform also. He's bought it. Being a voracious, this is the pronunciation, voracious. Voracious means a keen, avid, जबरदस्त इंटरेस्ट होना किसी चीज में. So you are a voracious reader, okay. You have a huge appetite for space, information, sorry. And I have learnt a lot about him, and therefore you have learnt a lot about him through the internet. And he is one of them. I am one of them who is keen on exploring the information about space. Jabardast interest hona. Okay. Now he deals in multiple businesses. उसके बहुत multiple businesses हैं. His car Tesla is one of the most efficient electric cars in the world. So he is the maker of this efficient electric car that's named Tesla. You should know that. He is concerned with the pressing problems. ये अब आप writing में भी use करेंगे, है ना. Pressing problems कौन से होते हैं? The problems that are current, that are being faced by the world at the present, or the problems that the world is facing, right? So you can write them as pressing problems. Very good word for writing also. On earth, like population explosion, overpopulation की जगह लिखने की जगह आप population explosion. Please don't mind the slips. Pollution, deforestation and many others. Now these are the pressing problems. He is concerned with all these. He believes that the human's race survival is a highly imperative. It's highly imperative. बहुत important है, बहुत ज़रूरी है to colonize some other planet. Colonize means to make other planet habitable, worth living, है ना. कोई और planet में आदमी को बसाना जिसको कहते हैं ना, like that in Hindi. And to achieve this aim, his company SpaceX is working on finding solutions to make Mars worth living for humans. तो वो किसकी खोज कर रहे हैं? मार्स में, कि मार्स में हमने प्लैनेट को हैबिटेबल करना है, मार्स को. I mean we want that. वो क्या कर रहा है कि मार्स में he wants that there should be some life on that planet. That also you can say, life on that planet. He wants to make it worth living.
Which planet? Mars particularly. So other than the Earth, Elon Musk is the richest person in the world with a net worth of $251 billion. Okay, so even you can say he's the richest person on the earth if you do not remember this. He has plumbed sufficient funds. Plumbed means invested funds. Okay, sufficient funds into SpaceX to design, manufacture and launch advanced robots in space. तो काफ़ी कुछ उसने किया है to design, manufacture robots that are operationable in space. ऐसे भी बोल सकते हैं. What he has done about it. तो उसको मार्स में लोगों को पहचानना है. You know, he wants that people should reside in Mars. Okay, then. And how do you feel about it? And of course, I have my online classes and you can contact me on this WhatsApp number. And in coaching, I do the personalized coaching and I give unlimited feedback. Evaluation services for speaking and writing is also available. And again, that I do myself. You can please note down these two numbers where you can contact me. Okay, and I have 36 years experience, not to say that, and this is my qualification. I am qualified enough to teach you IELTS, you know. I am a Cambridge, a Punjab and OET also examiner with MA in linguistics and MEd. Okay, now coming to how do you feel about him, you know. I staunchly believe, you know, this also can be used in अगेन इन राइटिंग आप यूज़ कर सकते हो. स्ट्रांगली बिलीव है ना, आप कह देते हो स्ट्रांगली बिलीव. आई स्टॉन्चली बिलीव दैट पीपल लाइक एलन मस्क आर अ ब्लेसिंग टू सोसाइटी. है ना, वो अच्छी चीज़ कर रहे हैं हमारे लिए, है ना. सो वो ब्लेसिंग है. ओके, ड्यू टू हिज टेंडेंसी टू थिंक बियॉन्ड. उसकी क्या टेंडेंसी है? To think beyond the conventional domain. Now, conventional domain means जो आम तरीके से सोचना. You know, domain is area. Conventional means traditional. जैसे आम व्यक्ति सोचता है, वो वैसे नहीं सोचता. He thinks out of the box. You can also say that. He has a tendency to think out of the box. वो हटके सोचता है, उसकी सोच हटके है. He has moved his ventures. Ventures यहाँ पे क्या होंगे? Companies. You know, all his business towards an impressive growth. काफ़ी growth है उसके. Growth trajectory. This is trajectory means path. उसने ऐसे path पे ला दिया है जहाँ पे उसका जो business है वो बहुत impressively grow हो रहा है ना. Trajectory. You know, so that is the path. Okay. So, if people are not monitored, if the children are not monitored, they will fall, or they will, you know, they kind of follow the wrong trajectory. That is the path and the course. This was another one for your writing you can also use. His mission to colonize Mars is an ambitious project whose success would bring a paradigm. See, the spellings are very carefully you will note down. Paradigm because you can use it in your writing, a 7+ word. Paradigm means काफ़ी shift हो जाना. Considerable change in the pattern in human beings' lives. So, thank you for this cue card that you have followed me and listened to it. And if you find it, please share with your friends, and of course please press the bell icon so that you can get notifications and you are getting vocab for your writing and speaking simultaneously. Thank you for following me, and please do like the video and subscribe it. Thank you.